Hello everyone, my name is Satya and in this video we will discuss about covering current affairs very holistically for BPSC prelim exam, as well as we will also learn some methods to score up to 80 plus percentage in current affairs section in BPSC pre as well as other state level exams and central level government exams. Okay. For this, I have segregated this video in 7 points and we will discuss each point one by one. Okay. Listen. Until 67th, until 67 BPSC, okay, re and original one, okay, things used to be very normal for current affairs. But since 68 BPSC pre, since 68, things have changed a lot. Things have changed very abruptly when it comes to the level of the paper and the level of the current affairs being asked now. In 68, in 69th, the level of the current affairs questions were slightly higher than 67, 66, 65 and 64th BPSC pre-level. Okay. And one thing you must have noticed that since 68 BPSC, okay, even those news, those events are being asked which have not been in headlines, okay, but they are important. They are important for our country, okay, and they are important for international community, as well as they are important for some other region, they are important. Okay. So regions, okay, questions, most of the questions are from those news, those events, those occurrings, happenings which are very normal and they are in the news for a long time. Okay. But since 68, we can see, we can analyze that there have been questions in the question paper which were not in limelight, but they were important. Okay. So in this video, we will also discuss about how to read current affairs, how to practice current affairs, and how to score up to 80 plus percentage in current section. That will be our ultimate goal. Okay. Now, the most important thing is that, okay, the most important thing is that through these 7 points, okay, we will learn that how current affairs can be very helpful for us to clear BPSC prelim exam. Okay. करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है बीपीएससी प्रीलिम के लिए. ओके. और वी विल सी कि हाउ वी कैन स्कोर मैक्सिमम. नाउ टू डील विथ करंट सेक्शन even in the worst situation like 68th BPSC and 69th BPSC, where current section was tougher, current section was difficult to score, and the most important thing was there was very little clue about sources from where questions were asked. सोर्सेस का पता नहीं था कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चंस जो थे बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से आए थे, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, ओके, और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से. यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स के न्यूज़ थे वो बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे मैगजीन में तो कवर ही नहीं हुए थे. ओके. सो through these 7 points we will discuss, okay, to score up to 80 plus percentage, not 100%. Okay, that might not be feasible, that might not be possible, okay, every time. Okay, but
If we follow these 7 points, okay, then believe me, you can score up to 80 plus percentage, 80 plus percent in current section वेरी कंफर्टेबली. बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए एफर्ट नहीं डालना होगा. आप बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी से आप 80% से ज़्यादा स्कोर कर देंगे करंट सेक्शन में. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हाउ मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स. ओके, in this point we will discuss that how many questions are asked in current section, okay, and what has been the trend for previous 5 to 6 years. Remember, for every discussion we will take 64th BPSC as the reference year. हम लोग 64th को रेफरेंस ईयर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से जो भी ट्रेंड है, वहाँ से जो भी पैटर्न है उसको हम फॉलो करेंगे. 64th, 65th, 66, 67, 68 एंड 69, 6 साल का जो पैटर्न है, 6 इयर्स का जो पैटर्न है उसे हम लोग देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे. ओके, एंड वी विल चेक हाउ द ट्रेंड्स हैव चेंज सो फार. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सोर्सेस अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, जो भी मार्केट में सोर्सेस अवेलेबल हैं उसको देखेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो सक्सेस रेट है उसके आधार पर देखेंगे और क्या क्या अभी मार्केट में फिलहाल जो है बीपीएससी के लिए अवेलेबल अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं. ठीक है. द थर्ड पॉइंट वी विल लुक अबाउट इज विच सोर्स टू बी फॉलोड. आउट ऑफ अवेलेबल सोर्सेज बहुत सारे हैं, लगभग 10 से 15 जो सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के मार्केट में, वो एस्पिरेंट्स के बीच फेमस हैं, एस्पिरेंट्स से फॉलो करते हैं. हम देखेंगे कि हाउ 68 बीपीएससी एंड 69 बीपीएससी हैज taught that what content we should follow and which resources we should pay heed. ओके, हमें किसे देखना है, कैसे हमें करना है, किस कंटेंट के आधार पे, किस रिसोर्स के आधार पे हमें कौन सा फॉलो करना है, ये 68 और 69 बीपीएससी ने हमें बता दिया है. ठीक है. एज वी नो देयर आर ऑलवेज फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी. फेवरेट टॉपिक्स होते हैं बीपीएससी कुछ. ठीक है, जस्ट लाइक यूपीएससी. ओके, आप अगर रिसर्च करेंगे, पीवाई क्यूज को देखेंगे तो आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. इवन इन केस ऑफ करंट अफेयर्स देयर आर वेरियस टॉपिक्स विच आर वेरी फेवरेट ऑफ बीपीएससी. वहां से बीपीएससी को मैक्सिमम टाइम बीपीएससी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टॉपिक्स. ओके, not always, okay, but at least you will see that these themes, these topics are being repeated almost every year or in alternate year. okay, हमेशा नहीं होता है, लेकिन 95% केसेस में ऐसे होते हैं कि थीम्स जो हैं रिपीट होते हैं. तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे क्या क्या थीम्स हैं. और ये जो थीम्स हैं, जस्ट लाइक हिस्ट्री, जस्ट लाइक पॉलिटी, जो वहाँ पे जैसे थीम होते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही थीम है करंट अफेयर्स की. दैट वी हैव टू look about that, we have to know that, and believe me, this will definitely help us. Okay, now the next point is how to read these sources. We will see that what can be the best possible way to read these sources and maximize the output out of them. Okay, मैक्सिमाइज कैसे करना है इसको और इसको रीड कैसे करना है हम लोग देखेंगे, ताकि वी कैन रिटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम. ओके, next point is how to revise, practice MCQs and quizzes. After reading the current affairs, it becomes our sole responsibility to revise the things, practice as much MCQs as we can do. But remember, whenever you practice MCQs, use a standard resources, use a standard channels, use a standard platforms. Don't chase anything which is not based on BPSC trend. Okay, and whenever I say trend simply means based on PYQs. Okay, PYQs के अगर
अगल बगल आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके क्वेश्चंस जो हैं नहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, रिमेंबर. ओके. And PYQs are the most sacred documents. I repeat every single time that PYQs are the most sacred documents. Most sacred documents for any exams till date. ठीक है, उसके इर्द गिर्द हमारी तैयारी होनी चाहिए. That will definitely pay out for us. That will definitely pay back for us. Okay. No worry regarding that. Okay. Last point जो है that we have to see is how to score 80+ % in current affairs. Okay. कैसे हमें 80% जो है करंट अफेयर्स को सॉल्व करना है और करेक्टली सॉल्व करना है. और बिलीव मी, इफ यू आर एबल टू सॉल्व 80% करंट अफेयर्स करेक्टली, देन इट इज गोइंग टू बूस्ट योर प्रोबेबिलिटी टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम. आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक काफ़ी बूस्ट करेगा और आप प्रीलिम एग्जाम क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी संभावना जो है बढ़ जाएगी. ओके. अगर आपने 80% करंट अफेयर्स में स्कोर किया तो 69th बीपीएससी में हमने देखा कि हाउ इवन स्कोरिंग 1 मार्क्स was a matter of success for us. Okay. Scoring 1 marks means adding 1 marks. Adding 1 mark was difficult in the exam hall. एक क्वेश्चन ज़्यादा बनाना, सही बनाना भी करंट सेक्शन में डिफिकल्ट हो गया था. The level was so good. The level was so tough that even adding 1 more mark to our current section had become a success for us in the exam hall. Okay. उस समय लेवल जो है काफ़ी हार्ड था इसकी वजह से. ओके. नाउ द फर्स्ट पॉइंट in details, how many marks from current affairs. Okay. In 68th BPSC, okay, total 30 questions were asked. Okay. Exactly 30, not more, not less, exactly 30. Okay. And 30 is the average in current section. Okay. Sometime it is 30, sometime it is 32, sometime 26, 28. We will see one by one. Okay. How things have changed and how current affairs portion has increased and decreased over the 5-6 years. Okay. In 64th BPSC, 68th 30 questions. In 64th there were 30 questions. Okay. You can go through PYQs. That will give you the proof, that will give you the detailed idea that how current section, how current affairs have contributed in your marks, have contributed in your syllabus over the past 6 years from 64th to 69th BPSC pre-exam. Okay. Now in 66th BPSC it was raised up to 32 questions. Okay. 32 क्वेश्चन पूछे गए थे 66 में. एंड 67th, ओके, जो ओरिजिनल पेपर था और जो कैंसल के बाद जो री एग्जाम हुआ, दोनों में लगभग जो है 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन वर आस्क्ड. ओके. नाउ व्हाट वी कैन इन्फर that in almost every BPSC pre-exam, near about 30 questions are being asked from current section. Okay. But in 69th BPSC, 26 questions were asked from current section. Okay. These 26 questions were directly from current section based on news and events. Okay.
So I have just considered their number 26, but there were also questions though asked in economic section, asked in economy, okay, economy में, and some questions were asked in science and tech, science and tech. Generally BPSC में साइंस होता है, जनरल साइंस, but now you can see from 68 science has become science and tech, okay. यूपीएससी के तर्ज पे यहाँ भी टेक्निकल जो पोर्शन है उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया। जैसे आपने वैक्सीन पे क्वेश्चन देखा था, दो तीन क्वेश्चन थे, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे थे। सो 26 क्वेश्चंस वर आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन एंड 3-4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड अंडर द इकोनॉमी and science section, okay. Means still we can see that even in 69th the number of current affairs questions were nearly 30, okay, 30 questions के अगल बगल ही आया था। So we can say the total contribution of current section is near about 30 questions, okay, and 30 questions out of 150 means 20% of the BPSC paper, 20% of BPSC pre paper, okay. प्री एग्जाम का 20% अकेले जो है करेंट सेक्शन से आता है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट हाउ मच करेंट अफेयर्स। Now, this 20% of the syllabus from current section will be very important for those who are weaker at static portion, okay. And in cases when you have underperformed in static portion, underperformed in subjects like हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, आप जब इन सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस खराब होता है लेकिन आप करेंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन डेफिनेटली करेंट अफेयर विल कंप्रोमाइज योर परफॉर्मेंस एंड मेक योर परफॉर्मेंस अ बैलेंस्ड वन, सो दैट यू स्टिल कीप योर सेल्फ इन द रेस, ओके. You still can think of qualifying BPSC pre-exam, okay. That time the importance of current affairs becomes more and more. The second point we will discuss here is sources available in the market, okay. For BPSC pre there are nearly 13 to 15 sources available for BPSC and famous among students, famous among aspirants, okay. And these sources till 68 BPSC, 67 BPSC used to contribute a lot in terms of questions from their platform, questions from their sources, questions from their magazines, from their PDFs, from their YouTube channel, okay. Lots of questions till 67 and 68 used to come from them, okay. And these important sources are, the very first source is newspaper, okay. Newspaper, you will see in BPSC many questions directly come from the newspaper reporting, okay. And till 67th almost 90+% of questions in current section used to come from newspaper. It doesn't matter which newspaper you are following, either English medium, okay, or Hindi medium, okay. These questions used to match from both of them, okay. If you are using Dainik Jagran or Dainik Bhaskar or Hindustan, you could solve this
questions. And if you are using The Hindu or Indian Express, you could solve this question. Okay, there was no any hard and fast rule for that which newspaper you should follow. At least you should be in touch with the newspaper, and most of the time questions from current section used to come from newspaper. Okay, the second important source is editorial. Okay, two publication, the first editorial for national and international events, and the second editorial Bihar Special. Okay, this is the most famous magazine among BPSC aspirants who are preparing from Patna or who are preparing from Bihar. Okay, this is the most successful magazine till 67th and 68th. Okay, the third source for current affair is SPD, same national and international publication which covers national and international news, and the second one is SPD for Bihar Special. Bihar Special. Okay, the fourth magazine that is also famous, and it is famous among a specific group like those who are preparing for UPSC, and they are also preparing for BPSC as well. Okay, among them PT 365 or Vision Eyes magazine is very famous. Vision Eyes magazine very famous. Okay, for Hindi medium preparing for UPSC and BPSC, Drishti IAS. Okay, there is one magazine by Ghatna secretaries, I Drishti. It is also a very good magazine. Though the number of aspirants following this magazine is not huge, but still it's a good magazine. Okay, seventh is Pratyogita Darpan. One of the oldest magazines, is still reliable and covers every news in details, and these news are important from exam point of view. Okay, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. प्रतियोगिता दर्पण जो है एक अच्छा रिसोर्स है, एक अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए. ओके, एक टेलीग्राम चैनल है, एट जो सोर्स है एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है एग्ज़ाम हंटर. आप सर्च कर सकते हैं. उनके भी PDF जो होते हैं या उनके जो करंट बाइट्स होते हैं या उनके जो मैगजीन्स होते हैं वो अच्छे होते हैं. दे आर वेल रिसर्च्ड एंड दे आर बिजी इन प्रिपेयरिंग दैट. दे पोर इन देयर एफर्ट वेरी ऑनेस्टली, एंड दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर्स. टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है. जो नाइन्थ रिसोर्स है फॉर करंट अफेयर्स, दैट इज GKtoday PDFs. GKtoday PDFs are very famous among English medium students. And you can say this is one-stop solution. Okay, one-stop solution for national, international, and even Bihar Special. This magazine, this PDF covers everything very nicely in details, and they cover all the important events. You can check, you can refer to their PDFs. Okay, and you can also visit their website GKtoday.com. Okay, this is also a very good source for current affairs. Okay,
there is a YouTube channel, Study IQ. Okay, this used to be very good channel, and when there was no editorial, when there was no GKtoday, people used to take help of Study IQs a lot. But now for Bihar especially, for it might not be very well sourced, but for national and international events, this is still very relevant. Okay, Study IQ. Now, there are also magazines from Pram IAS, Perfection IAS, BCW, BPSC Concept Wala. They also provide PDFs and magazines, and these magazines and PDFs used to contribute a lot up to 68 BPSC. 68 BPSC तक ये सारे जो हैं इनका इम्पैक्ट था बीपीएससी के करंट सेक्शन में. ओके, एंड देयर आर some YouTube channels also. Okay, some YouTube channels also which are good for BPSC pre-exam. Okay, now I have discussed nearly 10 to 13 magazines, YouTube channels and Telegram channels, all the resources for BPSC current section. Okay, so till right now we have discussed 2 points. The very first point was number of questions. Okay, number of questions asked in BPSC pre-exam, and the second point was what are the available sources in market for current section. Okay, now the third point is which source needs to be followed, or which sources need to be followed so that one can score up to 80% marks in current section. ओके, हमने 13 से 14 लगभग सोर्सेस की बात की है, और इट इज इम्पॉसिबल टू स्टिक टू दीज ऑल 13 to 14 sources for current affairs. So what we will do, we will just choose 2 or 3. We will just choose 2 or 3 sources for current affairs, and we will religiously stick to them. Believe me, if you do so, then it's my challenge, it's my experience that you will be easily sailing through current section. आप पार कर जाएं current section को, and very comprehensively you will score more than 80% in current section. Okay, this is my tried and tested method, and not only based on my experience. Okay, I will show you the proof in this video how things come in current affairs section and how these sources have very reliable outcomes, very reliable outputs in 68th BPSC and 69th BPSC. 67वीं BPSC तक जितने भी हमने सोर्सेस की बात की, they were relevant, they used to be significant, but from 68, not all the sources, including magazines, including coaching notes, including Telegram channels, YouTube channels, not all these sources are useful, reliable और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है. ये जो सारे सोर्सेस हैं, हर सोर्स जो है ना रिलायबल रह गया है, ना यूजफुल रह गए हैं, और ना ही रिजल्ट ओरिएंटेड है. 68 और 69 में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी मैगजीन, जो 67 तक जो मैगजीन जो थे, दे यूज्ड टू क्लेम 90% strike rate in current section. 90% strike rate. They failed very badly. Even they failed very badly. They fumbled in 68th and 69th BPSC. 68th and 69th BPSC they fumbled. Only 2 or 3 sources were there which still provided good outcomes,
they were still infallible, and those who have studied from these 2-3 sources, those aspirants scored well in current section. And it was my experience also that out of 26 questions asked directly in current section, I scored nearly 20 plus in current section. Out of 26, I scored 20. Okay. And what sources I followed, I will tell you one by one. Now, the very first source that must be followed by every aspirant, no matter which stream you belong, either English medium or Hindi medium, the very first and the ultimate source for current affairs is newspaper. I have already said any newspaper, कोई सा भी आप पढ़ें, हिंदी का, इंग्लिश का, कोई सा भी पढ़ें, लेकिन आप न्यूज के टच में रहें. एंड वाई शुड यू फॉलो न्यूज़पेपर? क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है वो इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल इन रूरल एरिया, इन अर्बन एरिया. ओके. एंड सपोज यू आर लिविंग इन फैमिली विद योर पेरेंट्स, विद योर अंकल, घर में न्यूज़पेपर आता है. एक न्यूज़पेपर से 4 से 5 रुपये इन्वेस्ट करके हिंदी मीडियम में आप पूरा घर उस न्यूज़पेपर का फायदा उठा सकता है. पूरा घर जो है, द होल फैमिली, ओके, द होल फैमिली कैन हार्नेस इट्स बेनिफिट. ओके, इट्स बेनिफिट, द होल फैमिली. और कॉस्टिंग कम है न्यूज़पेपर अगर आप यूज करते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए. इसके अलावा न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं. ठीक है, उनकी विश्वसनीयता जो है बनी है मार्केट में. नॉट लाइक यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, कुछ भी पोस्ट हो रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल कुछ भी पोस्ट हो रहे हैं और फिर जो है वो बाद में फेक डिक्लेयर होते हैं. वैसे इस केस में नहीं होता है न्यूज़पेपर के केस में. ठीक है, न्यूज़पेपर के जो रिपोर्ट होते हैं, जो न्यूज होते हैं, वो मल्टी फेसेटेड होते हैं. वो डिफरेंट एरियाज कवर करते हैं, डाइवर्स फील्ड को कवर करते हैं. एंड दे इनहेंस आवर रीजनिंग कैपेबिलिटी, थिंकिंग कैपेबिलिटी, और फाइनली दे हेल्प अस प्रिपेयरिंग फॉर बेटर राइटिंग स्किल. दे हेल्प अस नो वेरियस फील्ड्स एंड दे प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिपोर्ट. उनकी जो रिपोर्टिंग होती है कंटिन्यूअस होती है. कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़े, किसी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, किसी यूट्यूब चैनल से जुड़े, उसने रसिया यूक्रेन वार पे एक वीडियो डाल दिया, उसके बाद कम संभावना है कि उस पर कोई वीडियो डाला जाए अगर बहुत बड़ा कोई इवेंट इंसिडेंस नहीं होता है तब तक. ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर जो होगा ना, वो आपको लगातार रिपोर्टिंग करेगा रसिया यूक्रेन वार के बीच में, या इजराइल गाजा स्ट्राइक के ऊपर. और आपका जो फ्लो है वो बनता है, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होता है कि आप मल्टी लेवल और मल्टीपल तरीके से आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उनके जो न्यूज़ और आर्टिकल हैं उनको आप अलग अलग तरीकों से समझ के अपने मेंस के लिए भी तैयार कर सकते हैं. ठीक है, तो न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है. एक और फायदा होता है न्यूज़पेपर का कि जब बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, सपोज अभी आपका जो टॉपिक है वो है कच्चा वित्तु. कच्चा वित्तु, ठीक है, आप कच्चा वित्तु के बारे में कोई टेलीग्राम चैनल एक दिन बताएगा, 2 दिन बताएगा, कोई मैगजीन 2 पेज कवर करेगा, 2 पेज में छाप देगा, उसको दिखाएगा. लेकिन जो न्यूज़पेपर हैं लगातार आर्टिकल देंगे, लगातार आर्टिकल पब्लिश होंगे. पहले दिन पब्लिश होगा पीएम ने क्या कहा, दूसरा दिन पब्लिश होगा कि पीएम के बयान के ऊपर जो विदेश मंत्री हैं श्रीलंका के और इंडिया के, उनका क्या रिएक्शन रहा, रिएक्शन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. द थर्ड डे द सेम न्यूज़पेपर विल पब्लिश हाउ द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड. The fourth day, on the fourth day, the same newspaper will publish that what are the key steps taken by Sri Lankan government and Indian government to
solve out the issue, to resolve the problem, how many steps or what are the steps being taken, what are the key initiatives being taken by both the governments. Okay. Fifth day, it will publish about the griefs of fishermen from Tamil Nadu. The pain of fishermen of from Tamil Nadu is what challenges they face and how sometimes they are prosecuted. वो फिशरमैन के बारे में बताएगा कि कैसे उनको प्रॉब्लम होता है, एंड दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड सेंस, दिस विल क्रिएट अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट everything related to Kachavitu in a very channelized way, in a very systematic way, one by one. And believe me, if you read 3 to 4 days about Kachavitu, you would never require a revision. Means आपका जो मल्टीपल रिविजन होता है ना, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हो जाता है, आप रोजो चीज़ों को पढ़ते हैं. सो न्यूज़पेपर हेल्प्स इन मल्टीपल रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मल्टीपल रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मल्टीपल रिविजन along with मल्टीफेसेटेड मल्टी लेवल न्यूज के साथ साथ आपका मल्टीपल रिवीजन भी होगा. ठीक है, हमने अभी कच्चा वित्त के बारे में बात किया. ठीक है, और हाउ न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट कच्चा वित्त, द होल सागा being reported by newspaper, we have talked about that. Okay, now let's see how these things happen through newspaper. Okay, I will show you that regarding Kacha Vittu. Okay, see, this was the first article published by Times of India. I have taken example of Times of India only. Okay, I have taken so that you can see that how a single newspaper report multiple times about burning issues which are important for our national events, which are important for our international community. Okay, हमने देखा कि हाउ कच्चा वित्तु इज बीइंग रिपोर्टेड मल्टीपल टाइम्स बाय न्यूज़पेपर्स. ठीक है, वैसे ही जो भी कोई नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का बर्निंग इशू होता है, इंटरनेशनल लेवल का बर्निंग इशू होता है, न्यूज़पेपर उसको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके रिपोर्ट करते हैं. और उसके बारे में हमें एक और फ़ायदा होता है कि हम स्टैटिक पोर्शन जो है उस टॉपिक का, उस इशू का, वो भी जान जाते हैं. जैसे अभी कच्चा वित्तु की बात हो रही है, तो कच्चा वित्तु कब हैंडओवर किया गया, उसके इशू कब शुरू हुए, और कैसे श्रीलंका से इस द्वीप को लेके, एक छोटे से मतलब आइलैंड को लेके, जो हमारे एनिमिटी थी, जो हमारे हॉस्टिलिटी थी, उसको रिजॉल्व किया गया. और अभी जो उसके स्टेटस है कच्चा वित्तु का, उसको भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट करते हैं वेरियस एंगल से, वेरियस लोगों के पर्सपेक्टिव से देख के, कुछ उस पर नीतियों के पर्सपेक्टिव से, कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, कुछ इकोनॉमिक जो उसके बैकग्राउंड है उसको लेके, और कुछ जो इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसको लेके, तरह तरह के वहाँ पे आपको न्यूज़ और आर्टिकल देखने को मिलते हैं. ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अभी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, पिछले 3-4 दिनों में उसने कच्चा वित्तु के बारे में कैसे रिपोर्टिंग की है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये देखिए, आपको कच्चा वित्तु द टीनी आइलैंड दैट स्पार्क्ड इंडिया श्रीलंका कंट्रोवर्सी. ठीक है, फिर उसके हिस्टोरिकल डिस्प्यूट कैसे बढ़े आगे, कैसे इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडार नायके ने उन चीज़ों को रिजॉल्व किया, फिर जो है कैसे ये जो है पीएम मोदी ने साइट किया था कि पब्लिक को राइट है जानने का कि जो कच्चा वित्तु के चलते जो प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे फिशरमैन को, जो उनको प्रोसिक्यूट कर लिया जाता है, कभी कभी उनको जेल में सालों सालों के लिए डाल दिया जाता है उसके लिए. ठीक है, फिर वाई कच्चा वित्तु इज नॉट सच अ कैच बॉर्डर सेटलमेंट, कच्चा वित्तु इशू व सेटल 58 से श्रीलंका का क्या स्टैंड है इस पे. ठीक है, तो वेरियस जो डिप्लोमेट्स हैं, वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके स्टैंड्स क्या हैं, उनके स्टैंड्स कैसे हैं इस पे,
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कैसे उन्होंने इस पे रिएक्ट किया है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वेरियस आर्टिकल के माध्यम से। और उसका जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखें तो कैसे पाक स्ट्रेट के पास ये कच्चा बिट्टू का जो आइलैंड है वो अवेलेबल है, वो वहाँ पे है। और बीपीएससी और यूपीएससी की अगर बात करें तो बीपीएससी और यूपीएससी जो है वाटर बॉडी से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। आप देख सकते हैं 68 में गल्फ ऑफ मन्नार से क्वेश्चन पूछा गया, गल्फ ऑफ मन्नार, ओके, एंड दैट इज लोकेटेड इन दिस रीजन, ओके, नियर पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट कच्चा बिट्टू से आपका पाक स्ट्रेट कवर हो जाएगा, आपका गल्फ ऑफ मन्नार भी कवर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया आपको गोवा वाले कोस्टल एरिया से। ठीक है, वहां पे शिपरिक जो था उसके बेस पे क्वेश्चन था एक तो, जो कि वेस्टर्न कोस्ट से रिलेटेड था, गोवा से रिलेटेड था, वेस्टर्न कोस्ट से रिलेटेड था, गोवा से रिलेटेड था। आप ब्लैक सी पर क्वेश्चन देख चुके हैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो। ठीक है, आप क्वेश्चन देख चुके हैं रिवर से और बहुत सारे वाटर बॉडी से आते हैं। मैनग्रोव की बात करूँ तो मैं सुंदरवन डेल्टा से क्वेश्चन देख चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बीपीएससी का। तो कहने का मतलब है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो हमारे करेंट अफेयर्स को तो मजबूत करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है उसका रिवीजन भी हो जाता है आपको न्यूज़पेपर को पढ़ने से। आप एक क्वेश्चन देखेंगे 69 बीपीएससी में, वो था कर्नाटक की एक महारानी थी, उनके ऊपर था। ठीक है, कर्नाटक की महारानी थी। अब बहुत सारे लोग का कहना है रानी चेन्नम्मा जो थी उनके ऊपर था, और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि किसी बहुत मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन आप देखेंगे उस समय का जो न्यूज़ था ना, वहाँ पे वो करेंट अफेयर्स में बार बार आ रहा था। वहाँ पे नेताओं की जो इलेक्शन था, कर्नाटक का जो इलेक्शन था, उसके चलते वहाँ पे विजिट हो रहे थे, और उस समय वो जो नाम था महारानी का, रानी चेन्नम्मा का जो नाम था, एक फ्रीडम फाइटर थी, और फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, या उन्होंने मतलब उस रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा स्टेप्स लिया था, बहुत ही ब्रेवली उन्होंने फाइट किया था। ठीक है, तो उसका जिक्र हो रहा था, इसलिए रानी चेन्नम्मा से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत बार होता है कि आपको देखेंगे, आप कोई वाटर बॉडीज है बहुत बार न्यूज़ में है, लगता है कि वो करेंट का क्वेश्चन है, स्टडी का क्वेश्चन है, लेकिन करेंट से रिलेटेड होता है। आप जैसे बुद्धिज्म को लेके कोई डिस्कवरी हुआ, ठीक है, नालंदा के अगल बगल, या मान लेते हैं कि किसी भी एरिया में हुआ। अब नालंदा से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड फैक्ट हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे, और वहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पोर्शन का है, लेकिन वो क्वेश्चन जो होता है एक्चुअली इंटरलिंक्ड विथ स्टैटिक पोर्शन, बट दे आर बेस्ड ऑन करेंट इवेंट्स। ओके, सो न्यूज़पेपर के क्या फ़ायदे हैं मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर के अलावा जो मैगजीन है वो हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। न्यूज़पेपर के अलावा जो मैगजीन है वो हिंदी मीडियम के लिए मैं बात करूं तो प्रतियोगिता दर्पण जो है, दर्पण जो है वो बेस्ट मैगजीन है, बेस्ट मैगजीन है। क्यों? क्योंकि जो ऑल इट कवर्स ऑल इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ओके, फर्स्ट थिंग, ऑल इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट, ओके, एंड इन डिटेल्स, आपको डिटेल्स में ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, एंड दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर मेंस एग्जाम एंड प्री एग्जाम बोथ। मेंस एग्जाम भी आपको बीपीएससी के लिए देना है, केवल प्री निकाल के तो रिजल्ट होना नहीं है, सिलेक्शन होना नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आपको प्रतियोगिता दर्पण जो है इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू इन बोथ केसेस। ओके, फायदे क्या क्या हैं? सारे न्यूज कवर होते हैं, डिटेल्स में न्यूज होता है, आपको जो करेंट इवेंट हैं उसको यहाँ पे रिलेट किया जाता है स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है,
तो आपका स्टडी का भी रिवीजन होता है साथ साथ, और आप डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पाते हैं। ठीक है, आप जब प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं और बार बार आप चीज़ों को जब डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आपकी जो रिटेनिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर जाती है, आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसको एक कहानी के तौर पे एक काफ़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आपके सामने आते हैं, और कुछ फैक्ट्स अगर आपको याद रह गए तो आप एग्ज़ाम में जाके सही ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, ये है आपका प्रतियोगिता दर्पण, जो कि हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में आता है, लेकिन इसकी कुछ कॉन्स हैं, ये कुछ डिमेरिट हैं कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ठीक है, पहले इसका दाम कम हुआ करता था, अब कुछ ज़्यादा हो गया है, कॉस्टली है। दूसरा है कि बल्कि है, आपको इस पे यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। ओके, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे और आपका सिलेक्शन हो जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप 4 दिन में किसी मैगजीन को कवर करते हैं, वहाँ से आपको 26 में से 6 क्वेश्चन आता है, और किसी मैगजीन को आप 4 के बदले 7 दिन में कवर करते हैं, एंड यू आर एबल टू सॉल्व एट लीस्ट 18 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 26, देन आई विल से गो फॉर दिस। इसके लिए जाइए, ना कि इसके लिए जाइए। जरूर नहीं है जो शॉर्टकट है वो आपके लिए फ़ायदा हो। ठीक है, आप अगर किसी मैगजीन को इन्वेस्ट करते हैं उसमें और आपका उससे रिजल्ट होता है, आप उस पर टाइम देते हैं, आपका रिजल्ट होता है, तो बिल्कुल गो फॉर दैट मैगजीन। नो मैटर योर इन्वेस्टमेंट विल नॉट मैटर वंस यू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जो लोग जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका दे रही है बिहार सरकार कि आपको 50,000 रुपीज़ भी मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए, वंस यू क्लियर प्री। दिस इज वन टाइम। ओके, वंस यू क्लियर प्री, आप क्लियर करते हैं तो 50,000 का जो रिवार्ड मिल रहा है, एंड बिलीव मी दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस विल गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम टू यूज द रिसोर्सेज, टू परचेज द बेस्ट रिसोर्सेज, और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल ना घबराएं, आप इन्वेस्ट करें, टाइम दें, क्योंकि अल्टीमेटली योर फाइनल गोल इज टू गेट द, फाइनल गोल क्या है, रिजल्ट लाना है, ना कि टाइम वेस्ट करना है, रूम रेंट देना है और फिर तैयारी करते रहना है। आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है क्या है, रिजल्ट है, और उसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए अगर आपको टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल दें। नाउ आई हैव टॉक्ड 2 important resources for current affairs. The third resource I am going to tell you is very famous among English medium people. वो जो रिसोर्स है इंग्लिश मीडियम पीपल के बीच में काफ़ी फेमस है। ओके, और उसका एक काफ़ी अच्छा रिव्यू है मार्केट में। आई विल टेल यू विच रिसोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस रिसोर्स इज जीके टुडे। बहुत ही बेहतरीन सोर्स है आपको करंट अफेयर्स के लिए। सबसे अच्छी बात है कि दे कवर ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल, और बिहार के भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उनको भी कवर करता है। मीन्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ओके, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो क्वालिटी है जीके टुडे पीडीएफ्स की या जीके टुडे जो मैगजीन है उसका, कि आपको करेंट के साथ साथ आपको एक काफ़ी डिटेल्स में आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपका मल्टीपल रिवीजन करवाता है। किसके लिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए। आप देखेंगे उनके करेंट अफेयर्स को, आप पूरा करेंट अफेयर्स अगर पढ़ते हैं जनवरी मंथ का, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज 10% from each subject, like polity, like history, like geography, like economy, because
They provide news, they provide events in very details and they try to relate it with static portion. ठीक है। तीसरा जो फायदा है जीके टुडे का वो ये है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है 68 बीपीएससी में और 69 बीपीएससी में काफ़ी बेहतर रहा है। आई हैव shown it in my telegram channel that how GKtoday PDFs saved many people like me who scored very fair in current section and cleared BPSC 69th very comfortably. I scored 6 marks more than my cutoff. 6 marks more than my cutoff. Okay. And GKtoday was very helpful in that case. Okay. लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी हैं GKtoday के। पहला है वेरी कॉस्टली। फॉर सिंगल पर्सन it will cost nearly 2400 only for article PDF, and if you are interested in their MCQs that will cost 200 rupees more per month, means nearly you have to invest 400 rupees per month for getting their PDFs as well as MCQ क्वेश्चन बैंक। आपको लगभग 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप GKtoday PDF से पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके MCQ लेके और उनका जो आर्टिकल का PDF होता है उसको लेके। आई विल रिकमेंड कि आप MCQ को स्किप कर सकते हैं, मैंने किया है, हमेशा करता हूँ। आप जो है आर्टिकल को आप पढ़ें, उनके जो आर्टिकल आते हैं लगभग 200 रुपये के, ठीक है, उससे पढ़ें। आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ लोग मिलके शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करके आप पढ़ सकते हैं। दैट इज़ नॉट वेरी लेजिटिमेट, आई वुड नॉट से दिस इज लेजिटिमेट दिस इज लीगल वे, बिकॉज एनी हाउ इट इज़ गोइंग टू मेक लॉसेस टू दैट कंपनी। ओके, लेकिन आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से आप पढ़ने के बाद मल्टीपल रिवीजन करेंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप टेस्ट या क्विज लगाएंगे तो आपका MCQ का जो प्रॉब्लम है ये भी आपको कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो इनका एक डिमेरिट है कि बहुत ही बल्कि होता है, नियरली 200+ पेजेस फॉर अ सिंगल मंथ, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड इट कंज्यूम्स टाइम, ठीक है, मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग है और ये आपको एक मंथ में लगभग आपका 2 से 3 सिटिंग में कंप्लीट होता है। सिंगल डे में करना बहुत ही मुश्किल है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर GKtoday PDF से करते हैं, बल्कि है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप करते हैं, इससे आप करेंट अफेयर्स को अगर आप प्रिपेयर करते हैं, बिलीव मी यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये हर टॉपिक को कवर करता है। और इवन ऑल दोज रिपोर्ट्स which are published by international organization, they are not covered by local magazines or many magazines, YouTube channels and Telegram channels. This covers everything. और उसका इतना अच्छा आपको समरी दिया रहेगा इतने अच्छे तरीके से that after seeing the option you can go for taking the right option. They prepare their PDF so well. Okay. Demerit, it is costly, bulky, time consuming, but merit is that the strike rate is very good. At least you will get 90% question from their PDFs in every state PCS exams. State PCS, either you talk about BPSC, JPSC or UPPCS. I can tell you for these three because I have seen the question paper and I have seen how their PDFs has contributed to current affairs section. Okay. Even for UPSC, many successful candidates you can read on quora.com पे आप पढ़ सकते हैं। Many successful candidates from UPSC has recommended GKtoday PDF as an ultimate source for current affairs.
करंट अफेयर्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स बताया है उन्होंने। आप quora.com पे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है जिन्होंने क्लियर किया है, जो रैंक होल्डर है, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दे हैव सजेस्टेड इट एंड दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, a single source, a single resource for current affairs which you can stick to and you can score up to 90+% in current section. Your worry will disappear. In case of current affairs, you would not be perturbed if you are preparing from GKtoday PDF. ठीक है, 3 sources we have talked. First, न्यूज़पेपर, सेकेंड प्रतियोगिता दर्पण, एंड थर्ड GKtoday PDFs. Okay. Along these 3 sources, there are some other resources, there are some other magazines or notes which are very helpful and they are helpful in a very specific way. Okay. जैसे कि if I talk about PT 365, okay, I will say don't read the whole PDF, that would not fetch you better result. Okay, इनपुट आउटपुट रेशियो जो होगा वो कम होगा, क्योंकि दिस इज स्पेशली meant फॉर UPSC and it doesn't cover स्टेट PCS लेवल न्यूज। स्टेट में क्या हो रहे हैं वहां से भी बहुत कम आपका कवर होता है और बहुत ज़्यादा जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट को कवर करता है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम जाननी है, कुछ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कोई गवर्नमेंट का या किसी भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, उसके लिए आप PT 365 को रेफर कर सकते हैं। वहां से आप क्लियर कर लेंगे चीज़ों को। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप कवर कर सकते हैं, आपका जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके लिए आप PT 365 को, और बजट के लिए आप रेफर कर सकते हैं PT 365 को। ठीक है, लेकिन सारे न्यूज़ जो हैं स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, द सेकेंड source along with these 3 primary sources I will talk about is एडिटोरिया बिहार स्पेशल, और एडिटोरिया नेशनल इंटरनेशनल के लिए आता है और बिहार स्पेशल के लिए आता है। बिहार स्पेशल को आप पूरा पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड एवरी टॉपिक ऑफ एडिटोरिया बिहार स्पेशल। ओके, एवरी टॉपिक आपको कवर कर लेना। यहाँ से छोटा सा किताब होता है और कम फैक्ट होते हैं। यहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट, बिहार का आपको कवर कर लेना है, और कुछ जो हैं इनके स्पोर्ट्स रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं वो एक जगह पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ओके, और फिर कुछ जो न्यूज़ हैं वो इंडेक्स के रिगार्डिंग आपको एक जगह एट सिंगल प्लेस यू कैन फाइंड देम एंड यू कैन रिवाइज फ्रॉम एडिटोरिया एंड बिहार स्पेशल कैन बी रिवाइज फ्रॉम एडिटोरिया। आप इसका जो अल्टरनेट है, दोनों में से एक यूज करना है। यू हैव टू चूज जस्ट वन आउट ऑफ दिस 2। अल्टरनेट जो है SPD है। SPD का सेम वर्जन है नेशनल इंटरनेशनल के लिए और एक बिहार स्पेशल के लिए। Out of these 2, एडिटोरिया magazine and SPD magazine, you can choose one as a reference magazine along with these 3 resources. Okay, and these 3 you have to choose one. Either you choose newspaper and प्रतियोगिता दर्पण, or you choose newspaper and GKtoday. Okay, based on your medium, based on your comfortability, based on your access to the resources, you just choose 2 resources which are your primary resource. Stick to them. Okay, in any case stick to them, just have faith on them, न्यूज़पेपर पे और GKtoday पे या न्यूज़पेपर पे या प्रतियोगिता दर्पण पे। उसके अलावा आप PT 365 का मैंने बता दिया क्या रेफर करना है, एडिटोरिया का क्या रेफर करना है, SPD का क्या रेफर करना है। SPD का
क्या रेफर करना है, एडिटोरियल क्या रेफर करना है बता दिया, ठीक है। बिहार स्पेशल भी आता है और नेशनल के लिए भी आता है। ये आपका जो हो गया सोर्सेस हो गए। कुछ टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने बताया है एग्जाम हंटर, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप एक नज़र में यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं, यू कैन गो फॉर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक। ये जो है सोर्सेस मैंने बता दिए जो कि स्टिल रेलिवेंट हैं 68 बीपीएससी के लिए भी और 69 बीपीएससी के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और आई होप दिस रिसोर्सेस विल ऑल्सो हेल्प इन 78 बीपीएससी। 78 बीपीएससी में भी इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इनसे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और इनको फॉलो करने से आप वेरी कंफर्टेबली आप चीज़ों को गेन कर पाएंगे करंट सेक्शन में, और मार्क्स भी अच्छा स्कोर कर लेंगे आप। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ करंट अफेयर्स being repeated or being asked continuously in BPSC. Okay, in case of history we have seen Gandhi ji, Veer Kunwar Singh, cabinet mission are some important themes from where questions have been continuously asked. If you go through PYQs you will find n number of questions or maximum number of questions based on these three topics. So you can say these are the favorite themes of BPSC. Okay, in the same way there are some favorite themes for BPSC in current section. And how will we decide? Based on PYQs. I reiterate, PYQs are the most sacred documents for any exam till date. Okay, and what we observe, what we analyze, that these important themes are based on news and events of national and international importance. Okay. Second, space program related news, either national or world level. Okay. Third, based on environmental issues, any declaration, any agreement, any initiative by even our country or some great initiatives by some other countries at world level. Okay, world level. Okay, COP etc. The fourth favorite theme is government schemes. You will see in every exam some schemes are asked by BPSC. It may be of Bihar government, it may be of central government, or it may be some very famous scheme like Ladli Behan Yojana by other state government. Okay, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, दैट इज यूएन रिलेटेड न्यूज़। खास करके वो जो न्यूज़ है वो इंडिया से रिलेटेड है। दैट क्वेश्चन बीपीएससी आस्क्ड वेरी ऑफन। ओके, आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज को, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएन रिलेटेड जो न्यूज़ हैं खासकर यूएन और इंडिया से रिलेटेड हैं, जैसे कोई डिक्लेरेशन हो गया, कोई रिजोल्यूशन हो गया, वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में 3-4 गेम्स हैं जिसको कवर करते हैं। अगर ओलंपिक है तो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एशियन गेम्स से पूछे जाते हैं, और 3-4 जो स्पोर्ट्स हैं उसको कवर करते हैं वेरी हॉलिस्टिकली, वेरी ऑफन। जैसे क्रिकेट को कवर किया जाता है, बैडमिंटन किया जाता है, ठीक है, और 1-2 बार आपको जो अगर नेशनल लेवल कोई इवेंट हो रहे हैं हॉकी से, नेशनल इवेंट हॉकी से हो रहे हैं या फुटबॉल से या टेनिस से, उसको भी कवर करते हैं। या कोई चैम्पियनशिप हो रहा है इंडिया में फर्स्ट टाइम, जैसे चेस वर्ल्ड कप हो रहा है या स्नूकर वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई कार रेसिंग हो रहा है जो इंडिया में लंबे समय से नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा है, उसको पूछते हैं।
कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उसको पूछा जाता है, जो कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का हो सकता है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस का हो सकता है, उसको ही पूछा जाता है। ठीक है, वेरियस रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, रिपोर्ट्स, इंडेक्स पूछे जाते हैं, और जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीएम का कोई विजिट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर अगर बिहार से रिलेटेड है तो, बिहार से रिलेटेड है, या किसी कंट्री से रिलेटेड है जो कंट्री हमारा फ्रेंडली कंट्री है, उससे हमारे रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और पीएम को कोई अवार्ड मिला है या कोई वहाँ पे बहुत बड़ी डील हुई है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर कोई लिटरेरी अवार्ड है साहित्य को लेके, लिटरेरी अवार्ड है साहित्य के क्षेत्र में, वो ही पूछ जाता है। जैसे मैन बुकर प्राइज पूछ लेते हैं, कभी कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेंगे, कभी कभी सरस्वती सम्मान पूछ लेंगे, कालिदास सम्मान पूछ लेते हैं, उससे पूछा जाता है क्वेश्चन। मीन्स अवार्ड से, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ थीम्स आर रिपीटेड, ओके, एंड हाउ थीम बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय बीपीएससी। लेट्स see some examples. Okay, the very first question I will show you is this Param Kamrupa supercomputer facility in IITs, in which IIT it was launched by President of India. Okay, it was asked in 68 BPSC. In the same year, China's Tiangong space station was asked, that is related to space technology. In the same year, one question was based on World Space Week 2022, and its theme was asked. 3 questions from science and tech was asked. Okay, one more question was asked from science and tech, and that was regarding nuclear fusion facility by a laboratory regarding, यानी कि 4 क्वेश्चन, 4 questions were asked from science and tech theme, means regarding invention, discoveries, any new news at world level or national level in science and tech, they are often asked by BPSC. Most of these news have hit the headlines, but sometime it may be that these are not in headlines, but they are of great importance. इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और न्यूज़ में तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बीपीएससी पूछ लेती है उसको। तो ये जो थीम है मैंने आपको दिखाया कि थीम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक और थीम की बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम कोई इवेंट हुआ है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम 30, बहुत दिन बाद कोई इवेंट हुआ है, उससे भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम देम। यहाँ देख सकते हैं 69 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड का सबसे पुराना फॉसिल जो है कहाँ पाया गया है। रसिया इसका सही आंसर था, 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो बाय एनालाइजिंग पीवाईक्यूज वी कैन सी दैट हाउ बीपीएससी रिपीट द थीम्स। आप देख सकते हैं बुकर प्राइज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और लिटरेरी अवार्ड से पूछे गए हैं, थीम जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। 68 में पूछा गया है, 67 में आप देख सकते हैं, 66 मतलब अगर 5 बार, अगर इफ आई टॉक अबाउट BPSC question paper over 6 years from 64 to 69, you will see literary award has been asked in almost 4 question paper, 4 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, तो ये जो है these are the some important themes of current affairs, and for knowing about the themes in details just glance through PYQs को आप देखें और वहाँ से आपको सारी चीज़ें, everything will be very clear to you, and even it will be so clear that you will decide that which topic is more important, which topic should be paid more time, more attention, and which topic can be left out. This will
change your mindset about current affairs. How? PYQs. Okay, you will know important themes, you will know the important topics, and you will know the nature of questions being asked by BPSC, nature of question being asked by BPSC, and you will come with a very clear conclusion about preparing for current affairs. Okay, one more thing I would like to add regarding the current affairs, that how BPSC has evolved itself in terms of current affairs, over these 6 to 7 years, from 64th BPSC to 69th BPSC. Earlier, we used to see that most of the news asked in BPSC, most of the current questions asked in BPSC belong to those news which were in headlines, which were matter of great discussion over the month, over many days. Okay, but now things have changed. Okay, I will show you one by one. Okay, which country has recently, this is question from 69th BPSC, reaffirmed Arunachal Pradesh as the integral part of India. Okay, this news was in headlines. United States of America has passed a resolution, some of its members, and they supported India's claim over Arunachal Pradesh. Okay, this news was in headlines for many days. Many newspapers, many magazines, and many international journalists reported this. Okay, so it was in news for many days. So this question was asked, and it was easy to attempt it correctly. Okay, now the next question, the national education policy. Many times it has been debated, talked, many people has opined about this. Okay, this is also very famous news, and so it was asked, and this was the right answer. Okay, asked and many people attempted it correctly. This was one of the news that was very famous. Now see this question, the captive bred Asian giant tortoise, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India? This was not very famous, still it was asked, and Itangi National Park was the correct answer. Okay, so what I want to say, that BPSC current affairs has now become a blend of news which are in headlines and which are not in headlines, but one thing is very common in both the cases, both of them are important. This is also very important. Okay, and this is also very important, which was in news. Culture conservation by Tamil Nadu government, it was in news, and it is also very important regarding environmental news. Okay, environment के सेंस में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो है काफी चर्चा में था और एक जो है चर्चा में नहीं था. सो BPSC is now focusing on both the trends, news which are important, but it may be they are in headlines, it may be that they are not in headlines. Okay, one more comparison I would to do. Okay, about Titanic wreckage. Okay, this was making headlines especially because Park people were killed. Okay, they were submerged. Okay, so this was very famous news. I had attempted it wrongly. Titanic was the right answer. Okay, but at the same time, where did the former president of USA give his interview recently? It was not reported even by many newspapers. Okay, like Indian Express, it didn't report this. Only reported by some Western medias, some Western media houses, and also not covered by reputed magazines like PD365, GKtoday, PDFs. Okay, so even those news which are not in headlines, this is a very important news if you are living in a democratic country. So this news become very important, and especially when it is a matter regarding US president. Okay, and especially
one of the most famous presidents, Barack Obama. So this becomes very important. In the same way, there are so many events which are important but not hardly reported, not in limelight for many days over the years, but they are still being asked. See, Lisbon Declaration is very famous. Okay, this news, world first plant pollinator, this was the news, very famous, reported by many magazines. Okay, UPSC magazine, BPSC magazines. Okay, and many newspapers also, because this was world first, talking about the first, and BPSC loves first, talks about first, and BPSC loves anything that happens for the first time. Okay, BPSC asks questions from them very often and in use number. Okay, if you go through PIQs, you will see use number, current events happening for the first time, BPSC asks them very prominently. Okay, at the same time, this question was very important. Okay, from, if you talk about importance of language, this question was very good. Okay, but hardly reported by newspapers. Okay, and many magazines didn't report this, though I had read it in GKtoday PDF. Okay, so I ticked it correctly. So I want to say, what I want to say, that when you are preparing for current affairs, okay, and you want to score fair in current section, or you want to enhance your overall score for BPSC to qualify BPSC PRE, okay, then don't give any chance for your marks deduction. Okay, don't give any chance, don't take a risk of being at peril after the रिजल्ट के बाद जो आपको रोने का मौका मिले, उसके लिए आपको काम नहीं करना है आपको. You have to pour in your maximum effort so that you don't leave any scope of getting failed in BPSC PRE. ओके, इसके लिए क्या करना है, ये 26 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो हेडलाइंस में नहीं थे, जो मैगजीन बहुत कम रिपोर्ट किए थे, बट स्टिल दे वर इम्पॉर्टेंट. और बहुत सारे लोगों ने 6-7 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन सही किया, बाकी सारे गलत हो गए. तो इवन ट्राई टू स्कोर इन दिस सेक्शन ऑल्सो, दिस डिफिकल्ट सेक्शन में जो 6-7 मार्क्स है, इफ यू आर एबल टू स्कोर 4 to 5 क्वेश्चन, देन बिलीव मी, इट विल बूस्ट अप योर स्कोर, इट बूस्ट योर स्कोर. ओके, और आप एवरेज से ज़्यादा अच्छे मार्क्स पे खड़े होंगे आप. ठीक है, एंड यू नो, अकॉर्डिंग टू एक ट्वीट फेमस हुआ था बहुत, किसका, अतुल प्रसाद का, ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ BPSC, एक्स चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन. ओके, दैट top 1 to 2% people decide the cutoff and they only clear BPSC PRE exam. So to remain in the list, to be in the PDF of BPSC PRE exam, you have to be that 1 to 2%. And for being 1 to 2%, you don't have to leave any scope for not scoring in questions like this, that where US president give an interview regarding democratic aspects of democracy. Okay, and you have to, at the same time, you have to correct these questions like those who are in news for the very long time, like Titanic incidents. Okay, so in this way you can add 2-3 marks extra, better than the average people, better than those people who are on boundary line, and you can assure that your current affairs marks can boost up your overall score. Okay, the 5th point is how to read these sources. Okay, means we will know
how to read those sources which we are following, and how to complete the themes and sources, how to complete these two things. Okay, for this we will follow 3 steps. Okay, there can be more or less steps, but these 3 steps if you follow, then it will cover the current affairs very precisely. In a precise way you can cover the current affairs, and there will be minimum chance to make error in exam hall. Okay, to make error in exam hall there will be minimum chance if you follow these 3 steps. The very first step is just go through the magazine at a glance. At a glance go through the magazine. एक नज़र में आप पूरे मैगजीन को देख लेंगे. Okay, and based on these important themes you will decide at what to read with maximum effort and what to left. Okay, the second step you need to follow is making notes out of it. Make notes out of magazine. Okay, remember, making notes might seem difficult. In the first instance it may seem difficult task. Okay, but in the end it helps a lot. It helps multiple revision in less time or no time. At the same time, one reading and one making notes will also help you revise the whole magazine. Okay, the second benefit of making notes is that you don't need to read the whole magazine. You just need to read the filtered things. फिल्टर्ड न्यूज़ को आपको पढ़ना है और आप नोट्स उसी चीज़ का बनाएंगे जिससे लगता है कि आपसे डाउट होगा या आप उसको बार बार देखने की ज़रूरत है. आप नोट्स उसका बनाएंगे, बाकी को आप छोड़ सकते हैं. बाकी का नोट्स आप छोड़ सकते हैं जो आपको बार बार याद हो चुका है, रिवाइज हो चुका है पेपर के माध्यम से, फिर आप उसको छोड़ सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज reading your notes. Reading your notes multiple times. आप जब नोट्स बना लेंगे तो आप उसको बार बार पढ़ें. ठीक है, हर दिन 1 से 2 घंटा आप डेडिकेट कर सकते हैं. मतलब महीने में इन 1 month जस्ट डेडिकेट 5 to 6 hours फॉर रिविजन ऑफ योर नोट्स. ओके, एंड डू इट फॉर 2-3 times before BPSC pre. Believe me, this will increase your efficiency and accuracy level. Accuracy और efficiency level जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका अगर आप उसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं. और नोट्स जो हैं उसको आप ट्रेवलिंग के टाइम भी रिवाइज कर सकते हैं. कहीं आप 2 दिन के लिए छुट्टी में हैं उस समय भी रिवाइज कर सकते हैं. मीन्स दिस notes will solve your time issues. You don't need to spend much time on it. In just 1 hour you can revise your own notes for 1 month for current affairs. Okay, once you have done multiple revision, you will retain the news, the events, the happenings for longer duration, and the chances to increase your efficiency, increase your accuracy will be maximum in this case. So we have to follow 3 steps. First step is glancing through the magazine. Second step is making notes out of it, and the third step is reading your own notes multiple times. Whenever you get time, just dedicate 6 to 7 hours
in a month for revision and repeat it for 2 to 3 times before BPSC prelim exam. Okay. Now I will show you how to make notes for BPSC. Okay. See, I follow this strategy. I just buy this publication practice booklet for mains and I just follow this strategy. Okay. You can see I have made notes for January 2024. Okay. And I write the date and I make notes like this. Okay. I read the whole news. First, I go through the PDFs of GKtoday. Okay. GKtoday PDFs. Okay. Then I underline or mark those points which seems important for me, and in the next time I make notes out of it. I make notes and I go for multiple revision through my notes. Okay. Those news which are very known, which I have come across through newspaper, I make them a very short notes for them. I make a very shorter notes, and those news which are important, which are hard for me to remember, I make a detailed notes about them. That strategy I follow and I go for multiple revision. Okay. You can see this. Okay. So you have to make notes like this. You can follow your own strategy, no issue for that. Okay. But note making should be part of your current affairs section. Okay. And in this way you can highlight the important points of your current section from your magazine or from your e-PDF, e-magazine or from your PDFs. Okay. So this will help you to know what is important, because out of 200 pages, 300 pages, it becomes very difficult to filter out the important and non-important things. This is not important, so I have not marked it. Hidden bird research was in controversy, but this is not important from exam point of view. Such controversial things are hardly asked in BPSC, so skip them. Okay. But Indian Jones Square Kilometer Array Observatory in Atacama Desert, so this is important. Finance Commission was asked recently in 64 सीट्स के लिए अभी एक वैकेंसी आई थी, दैट इज विजिलेंस ऑफिसर के लिए, वहाँ पे पूछा गया था एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फाइनेंस कमीशन से बीपीएससी में भी क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा 66 7th में आया था. ठीक है. सो मेक नोट्स, मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक दैट, हाईलाइट देम, मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड गो फॉर मल्टीपल रिविजन. That's the strategy you have to follow to read the current affairs. Okay. The next point is how to revise practice MCQs and quizzes. Okay. The most common way to revise is to revise from your notes. Okay. Notes से revise करें. You can go for rewriting. If you find difficult to recall, then go for rewriting. Get some points, some events, okay, and write about them one by one. जैसे कोई आपका न्यूज हो गया, आई मेंशन कच्चा वित्तु, तो उसके बारे में 2-4 इन्फॉर्मेशन लिखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए. 1974, इंडिया श्रीलंका, नियर पाक स्ट्रेट. ओके. ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीराइट करके, और मल्टीपल रिवीजन करके आप रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को. ठीक है. प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे आप textbook.com. दिस इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस MCQs because they provide monthly compilation in form of mock test. मॉक टेस्ट के फॉर्म में मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा. यू कैन अटेम्प्ट देयर जस्ट बाय वन पास. ओके. और समटाइम इट इज फ्रीली अवेलेबल. ओके. द सेकेंड प्लेटफॉर्म इज प्रैक्टिस डेली क्विजेस, और just set a target of 10 days and practice MCQs on GKtoday platforms. वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है. आप वहाँ से कर सकते हैं. The third platform I would mention, that is
BPSC Exam Hunter channel. BPSC Exam Hunter channel. You can go and attempt quizzes via Telegram. Okay. The fourth platform is my own channel, that is BPSC Insights 01. I have shared a link in the comment box, or it is shared in the detail of the video. Okay, where details has been mentioned. Okay, you can check from there. Okay, here I post monthly quizzes. Okay, monthly quizzes. Suppose I posted 30 questions from January, and I will post those questions which are not in limelight but they are important. So I assume that if you are taking that rightly, if you are attempting that correctly, then you must have gone through GKtoday PDFs, and my quizzes are based on GKtoday PDFs. Okay, so these are the ways where you can revise, practice MCQs and quizzes. Okay, now the last point is how to score 80% in current section. Okay, first choose the right source. I have discussed. Okay, right sources. Second, read them, make notes out of it, and go for multiple revision. Revision is very necessary. Number 3, whatever you read, that must be in line with PYQs. जो आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो PYQs के थीम पे आधारित रहे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए. दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन PYQs. Okay, once you go through PYQs, everything becomes very clear to you. Okay, you don't need to be perplexed for that. Okay, number 4th point is attempt quizzes, okay, mocks on platform that you find suitable. You can, I have mentioned टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं आप, जीके टुडे को, माई चैनल यूज कर सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी इनसाइट्स, और आप एग्जाम हंटर को यूज कर सकते हैं. दीज आर गुड चैनल्स एंड यू कैन अटेम्प्ट क्विजेस, मॉक्स हियर. ओके, number 5th point is during exam time always revise current affairs with help of during exam time always revise current affairs with help of solving MCQs. That will clear your doubt and that will shatter any chance of making mistakes in exam, because sometimes options are very closer and we cannot differentiate between them. Okay, we cannot differentiate among them, and that's why we make mistakes. We go for attempting wrong. Okay, so it depends on that. It makes very important for us to practice with the help of MCQs. Okay, so these are the some important points I have discussed so far that will definitely help us to score 80% plus marks in current section. करंट सेक्शन में नियरली 80% मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं फाइनली, जो कि आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे देखिए, व्हाई आई से यू शुड गो फॉर एनालाइजिंग PYQs. दिस क्वेश्चन is from 69th BPSC. Okay, the Ministry of Home Affairs has completed the Mother Tongue Survey of India in November 2022 with field videography of the country's how many languages. I
have not read about this news, okay, but I have made mistakes in 68 BPSC. I have ticked this in 68, and the same question was asked in 68 BPSC, okay. This was the same question repeated with each and every word being the same, and I blindly ticked because I have missed it in 68. So मैंने इस बार कोई गलती नहीं की और 576 सही आंसर वहां पे टिक किया. One question was repeated in 69 from 68, okay. One more question was repeated. This question, see, what is the name of Tesla's humanoid robot launched in October 2015? In 68, I had opted Atlas, okay, but this was not the correct answer, it was wrong, and the right answer was Optimus. So this time I was also getting a faded print of Atlas, but finally I remember that no, I had mistaken the same in 68, so I took the right answer, that is Optimus. So PYQs are very relevant, significant, and most important document even for current sections. So in this video, I have discussed all the important things that are necessary for scoring up to 80+% in current section, okay. And I make sure that once you follow the strategy, once you follow these steps, things would be very easy for you, things would be very comfortable for you, okay. आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, and you will end up with very good review for this preparation strategy. ठीक है, thank you.